अस्सलाम वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे पास क्लास 9 की इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 30 है, जिसके हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन 6 से लेकर 10 तक। जिससे मैंने आपको पहले भी बताया पहले वाले लेक्चर में कि जो आपने कॉम्प्रिहेंशन याद किस तरह करने हैं। इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको नीचे भी दिए गए हैं सोल्व वाले कॉम्प्रिहेंशन के, और इनके मैंने ऊपर भी इनके पैराग्राफ के अंदर जो मार्क हो सकते थे आंसर के हिंट के तौर पर वो मैंने मार्क कर दिया। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन है जी, इज द मिल्क इन टिन्स पाउडर्ड और लिक्विड। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ नीचे वो लिखा हुआ है द मिल्क इन द टिन इज पाउडर्ड। जब वो ऊपर देखें तो मैंने ये लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में, यही मार्क किया हुआ है इट इज पाउडर्ड मिल्क। ठीक है, हिंट के तौर पर आपने ये देख लेना कि कहाँ पे याद याद आपने वही आंसर करने जो नीचे लिखे हुए हैं। सिर्फ एक हिंट के तौर पर आपने यहाँ से ऊपर से भी देख, अगर आपको कोई पता नहीं लग रहा कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो आप ये हिंट भी याद कर सकते हो साथ साथ। व्हाट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क। द वाटर इन द मिल्क evaporates। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट कम्स टू द टॉप ऑफ द फ्रेश मिल्क व्हेन इट स्टेज फॉर अ लिटिल टाइम इन अ डिश। द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क कम्स टू द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट। द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज फैट इन इट। व्हाट इज क्रीम। The cream is the fat of the milk which comes to the top of it. What do people make from cream? People make butter from cream. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन 7 है। इसके भी मैंने हिंट्स वगैरह सारे मार्क कर दिए हुए हैं, आप ऊपर से भी याद कर सकते हो और इनके आंसर तो आप लोगों ने याद करने ही करने हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज काइंड एंड जस्ट टू देम। व्हाट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी। द ऑर्डर्स वर गिवन नॉट The orders were not to harm the farmers, aged persons, women, children, and other civilians. What did he say about the farmers and civilians? He said they are the real strength of the society. How had their former masters treated them? Their former masters had been hard on them. How did Hazrat Khalid bin Walid win the hearts of the conquered people? He won their hearts with kindness. Why did the people hate their old masters? The people hated their former masters for their unkind treatment. इन सब के जो मैंने मार्क किया हुआ उनके आंसर मैंने ऊपर पैराग्राफ में भी दे दिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मार्क नहीं हुए हुए वो आपको नीचे आंसर में से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रिहेंशन 8 है। Why do we call the present age the age of electricity? We call the present age the age of electricity as lot of things are done with the help of electricity. Which age has yielded place to age of electricity? The steam age has yielded place to the age of electricity. How do we send and receive messages? We use telegraph, telephone, and wireless to send and receive messages. How do we state some important uses of electricity? Railways, factories, and mills work with the help of electricity. What do you think is the future of electricity? Electricity promises a bright future for mankind. Next हमारे पास combination 9 है। Question number 1 है जी, what kind of company should a good student keep? A good student should keep good company. Second question है जी, why do some students miss their classes? They miss their classes because some other fellow students do the same. Question number 3 है जी, why do good students enjoy good health? The good students enjoy good health because they work and play at proper times. Why are games necessary for students? Games are necessary for students because games keep them healthy. What factors may bring success to a student? The success of a student lies in following a timetable of work and play. नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन नंबर 10 है। What good do the newspapers do to us? The newspapers keep us in touch with the latest world affairs and happenings. Why in older days could a man not know what was going on in far off places? In older days, man could not know what was taking place at distant places due to the lack of means of communications. What is the responsibility of the press today? Today, the press is responsible for educating the public opinion. How are the laws of country shaped nowadays? Newspapers play a great part in shaping the laws of country. How are newspapers a source of public guidance? Newspapers bring us full information relating to all aspects of society. What is your opinion about the power of press? The press has great powers. तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। अगर इस लेक्चर को पढ़ते हुए किसी अल्फाज की गलती होगी तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।